Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotkotli. Today हम गैसियस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल comprises of oxygen, that is, it is regarded as the vital element in Earth. It is the most common element of the human body. It constitutes about 65% of the mass of the human body, and mass of this is in the form of water. Oxygen also makes up about 30% of the Earth and 20% of the atmosphere. So हम जानते हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, सन और क्लाउड की एनर्जी कन्वर्ट होके इट इज कम बैक्स टू द अर्थ। हमारे जो एनिमल्स हैं इसको ब्रीद इन करते हैं, दे रिलीज CO2 एंड इट अगेन गोज टू द which is taken up by the plants. Processes that consume oxygen. हम ब्रीदिंग करते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं। ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। जब फ्लोरा और फौना डाइज या मरते हैं तो वो डिके करते हैं और डिके की प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज की जाती है। Rusting is also known as oxidation, in which iron turns into iron oxide. When iron things rust, they absorb oxygen. Without oxygen, it is hard to ignite. किसी भी चीज को जलाना या आग लगाना ऑक्सीजन के बिना मुश्किल होता है, नामुमकिन है। So when जब चीजें जलती हैं यानी बर्न होती हैं, तो they consume oxygen and discharge carbon dioxide. Processes that produce oxygen. कहाँ से निकलती है ऑक्सीजन? हमने अभी तक कंजम्पशन देखा, अब कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है? सो फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की ऑब्जॉर्ब करके CO2 और वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लस भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ carbohydrates. So first source of production of oxygen is through photosynthesis. Second is sunlight. Some sunlight oxygen is produced when sunlight reacts with water vapor in the atmosphere. It is involved in the oxidation of carbohydrates with the release of energy, CO2 and water. Cycling of oxygen is a highly complex process. It occurs in several combinations and chemical forms. Oxygen combines with nitrogen to form nitrates. It combines with other elements and minerals to form oxides such as iron oxide, aluminium oxide, and others. CO2 is absorbed by plants during photosynthesis. A considerable amount of oxygen is produced from the decomposition of water molecules by sunlight during photosynthesis. Respiration by humans and animals consume oxygen and release CO2 into the atmosphere. Again, this carbon dioxide is taken up by plants for photosynthesis and the process is repeated. So this is the oxygen cycle. Atmospheric nitrogen, you can say photosynthesis से atmospheric nitrogen का generation हो रहा है और फिर consumption हो रहा है by the process of respiration and CO2 is released. So this process is a continuous cyclic process. Plants से तो oxygen generate होती है photosynthesis के द्वारा, या सनलाइट पे जो वाटर वेपर या भाप रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। हम कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन में, डिकम्पोजिशन में, रस्टिंग में और कॉम्बशन में। नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, एज वी ऑल नो, फोटोसिंथेसिस में और सेल्यूलर रेस्पिरेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ CO2. Carbon is found in all the major macromolecules like carbohydrates, nucleic acids, proteins, and lipids, which are necessary for a living system. Earth's atmosphere contains carbon in the form of CO2. There are 5 reservoirs of CO2: atmosphere, terrestrial biosphere, oceans, ocean sediments, and Earth's interior. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और CO2 ब्रेथ आउट करते हैं और ये CO2 प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के। सो प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल जो मैंने अभी बताया, फोटोसिंथेसिस में plants and other crops use CO2 along with solar energy. So ये plants हैं, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद CO2 है along with sunlight यूज करते हैं for making building materials, that is carbohydrates.
and thus storing carbon for themselves and other organisms, and they release oxygen. Cellular respiration, both autotrophs and heterotrophs use oxygen to break down carbohydrates during cellular. तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बने वाले एनिमल्स कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो CO2 is released. Consumers obtain energy rich molecules that contain carbon by eating plant and animals. Volcanic eruptions and geothermal vents, carbon from deep within the interior is brought to the earth surface during eruptions of steam, gases and lava. जब भी volcanic eruptions होते हैं तो steam, gas और lava निकलते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है. Decomposition. Carbon is returned to the environment through decomposers and cellular respirations. Combustion. जब wood या fossil fuel जलता है तो केमिकल रिएक्शन के कारण CO2 रिलीज होती है. Coal, petroleum, calcium carbonate rock are deposited in sediment and underground. Calcium carbonate deposits are eroded by the water to form CO2. Large amount of carbon dioxide are tied up in the wood, only returning the atmosphere when wood is burnt. Nitrogen cycle. पहले CO2 को ठीक से समझते हैं. CO2 एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमती है. पहली बात है फोटोसिंथेसिस द्वारा ये रेगुलर साइक्लिक होती रहती है. फॉरेस्ट फायर के कारण आती है. एनिमल प्लांट और रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से हम लोग CO2 रिलीज करते हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. इससे पहले ये भी था कि हम आग चल रही है उससे CO2 रिलीज हो रही है. एनिमल्स जो ब्रेथ आउट कर रहे हैं उससे CO2 रिलीज हो रही है और फोटोसिंथेसिस द्वारा यूटिलाइज हो रही है. अगेन इनके फॉर्म जो खाना बना फोटोसिंथेसिस द्वारा उसमें भी फिर CO2 मौजूद होती है जिसके डिकम्पोजिशन या बर्निंग से CO2 रिलीज होती है. So next cycle is nitrogen cycle. All organisms need nitrogen to make proteins and nucleic acids. Most nitrogen is found in the atmosphere. That is 80% as N2 and almost nothing living things cannot use it. All organisms rely on the actions of bacteria that are able to transform nitrogen gas into usable form. So bacteria जो है nitrogen gas को यूजेबल करने के लिए काम में लाने योग्य करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम जो है सॉइल में रहते हैं और रूट्स में रहते हैं. कुछ प्लांट्स के जैसे बीन्स, पीस, क्लोवर एंड अल्फाल्फा. These bacteria have enzymes that can break the atmospheric nitrogen bonds. Nitrogen atoms are then free to bond with hydrogen atoms to form ammonia. So ये denitrifying bacteria है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट्स और ये लाइटनिंग्स है जो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है नाइट्रेट्स, ये सब एब्जॉर्ब होकर नाइट्रोजन को साइकिल को हेल्प करते हैं. प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया. Ammonia can be absorbed by plants from the soil and used to make proteins and can enter the food for consumption. So nitrogen fixation क्या है? नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है. So as you can see in this whole process, consumers obtain nitrogen from plants and animals. They eat by digesting the food proteins, use it to make their own proteins. Ammonification, decomposers return the nitrogen from the remain of dead plants. Nitrogen is also returned from plants in ways by decomposition through ammonification. So here you can see that free nitrogen nitrogen gas is being converted into ammonia, nitrates into nitrogen into nitrates. You can see in this animation beautifully it is depicted how atmospheric nitrogen is being converted into ammonia and nitrates into nitrites. Same feature you can see, these are the bacteria which act upon the atmospheric nitrogen and converted into nitrites. So this is called as denitrification, when anaerobic bacteria break down nitrates and release nitrogen gas back into the atmosphere. Autotrophs are therefore dependent on nitrogen fixing bacteria. So bacteria will break down, the bacteria will break down the nitrogen and make a nitrogenous gas. Sediment, nitrates of the soil are washed down through the sea or leached deep into the earth along with percolating water. Nitrates thus lost from soil surface are locked up in the rocks.
This is sedimentation of nitrogen. Nitrogen of rock is released only when the rocks are exposed in weather. यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, they are releasing free nitrogen. Thus, a large part of nitrogen is fixed up and stored in plants and animals and microbes. Nitrogen leaves the living system, the same amount is taken from the atmosphere, and the input and outflow of nitrogen are balanced in the ecosystem. The overall nitrogen is present in this figure. See, you can see that nitrogen in atmosphere by lightning and by neem nitrogen from bacteria, it comes through various means into the soil. सॉइल पे आती है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया में. ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस इसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. दूसरा है प्लांट प्रोटीन्स जो हम खाते हैं, उनका जो एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन के फेस में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में भी फ्री नाइट्रेट्स अमोनिया होते हैं. और तीसरा फिश ब्लू ग्रीन एल्गे खाती है तो उससे भी उसकी बॉडी के डिके से भी नाइट्राइट्स एंड अमोनिया आते हैं. तो इस तरह से एक कंटिन्यूस साइकिल नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहती है. थैंक यू.